pick up liver tumors worldwide is ultrasound. ठीक है, अल्ट्रासाउंड सस्ता भी होता है, हर जगह अवेलेबल होता है. जब पेशेंट जाता है कि लार्ज लिवर के साथ डॉक्टर के पास, तो उसको क्या लिख के देता है, उसको अल्ट्रासाउंड लिख के देता है. जाहिर है वो सस्ता भी है, हर जगह अवेलेबल है और आसानी से विदाउट हैविंग लॉन्ग क्यू ऑफ अपॉइंटमेंट्स हो जाता है. तो उसमें जो नोड्यूल्स पिक होते हैं, तो कुछ बुक्स में इवन उन नोड्यूल्स को भी उन्होंने बिनाइन ट्यूमर्स में इंक्लूड किया हुआ है, ऑल्दो इट इज नॉट लाइक दिस, बट इन अल्ट्रासाउंड दे आर यूजुअली picked up as nodules or slash tumors. So benign tumors, and it is interesting that the most common benign tumor in the liver is hemangioma. Okay, ending with the suffix of oma. As we have gone through in the chapter of neoplasia, whenever a tumor ends with the suffix of oma, it means it is benign. In large majority of the cases, this is a rule. Whenever it ends with the suffix of oma, it means it is benign. Then there is a tumor which is called adenoma, hepatic adenoma. याद है जब हम न्यूप्लेसिया करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एपिथेलियल या ग्लैंडुलर ओरिजिन के ट्यूमर्स हैं, जो उनके बिनाइन ट्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, एडिनोमा. स्टमक में गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, वहां के बिनाइन ट्यूमर को क्या कहते हैं, एडिनोमा. कोलन में ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है, वहां के बिनाइन ट्यूमर को क्या कहते हैं, एडिनोमा. इसी तरह ब्रेस्ट में जो ट्यूमर होता है जो बिनाइन होता है उसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा. तो व्हेनेवर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स give rise to benign tumors, most commonly the term used is adenoma, which is ending with the suffix of oma. Okay, so hepatic adenoma, it means a benign tumor of hepatic cells. Then there are a few cysts, as Dr. Farida has taught you, that these cysts present as swellings in the these cysts present as nodules on ultrasound. Okay, so again benign tumors कौन से हो सकते हैं. मैंने ये focal nodular hyperplasia इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ books में इसको tumors में लिखा हुआ है, although it is a reactive condition which is forming nodule which is picked up in ultrasound, and technically this is not a tumor. Okay, but somewhere it is written just to clarify that these two things, that is focal nodular hyperplasia and liver cysts, are not included in the tumors, but they can be picked up on ultrasound. But they can be picked up on ultrasound as nodules, as cysts, as tumors. So in some books it is written like this. That is why when you guys don't attend the lecture and you simply take up these PowerPoint presentations, which I know that they are easily available on Edmodo or some website, and you go through these presentations without taking lecture, you may end up in problem. Okay, so these presentations, these lectures are made to be are presented in a way so that you should know the explanation. ठीक है, technically ये दोनों चीजें focal nodular hyperplasia और liver cyst मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड की कि कुछ बुक्स में इनको ट्यूमर की तरह लिखा होता है क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड पे एज tumors पिक होते हैं. And ultrasound is a modality which is most commonly used to pick up the nodules, and the reason is very simple. They are easily available, cheap, no long queue of waiting. Okay, so लेकिन ये बात क्या याद रखनी है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है लिवर में, hemangioma, which is ending with the suffix of oma. benign होता है, लेकिन जो है what problems it can have, we'll do it subsequently. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिवर का जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बड़ा क्लियर है. कार्सिनोमा हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल. ठीक है, हेपेटोसेलुलर का क्या मतलब है कि जिसका हेपेटोसाइट्स का ओरिजिन है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो इसको हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लेकिन एक मिसनोमर है जो बाजी का बुक्स में लिखा होता है जिसको हम कहते हैं हेपेटोमा, HEPATOMA. मैंने आगे प्रेजेंटेशन में लिखा भी है. Hepatoma is a misnomer and is the other name for hepatocellular carcinoma. So hepatoma, although ending with the suffix of oma, is not a benign tumor. Okay, so when we were doing neoplasia, we did some misnomers like seminoma, hepatoma, melanoma. All these are malignant tumors, but still ending with the suffix of oma. So these are the basic concepts which we need to revisit again and again. And you also need to. Then is hepatoblastoma. ठीक है, जब भी term blastoma की आती है तो इसका मतलब होता है कि इमेच्योर सेल, और जब भी इमेच्योर सेल होते हैं तो वो ट्यूमर्स बच्चों में आर मोर कॉमन. देन इज अ cholangiocarcinoma, which is a malignant tumor of bile duct, and finally comes the metastasis. Okay, so in liver and lung, the two organs in the body which have dual blood supply.
ठीक है, लंग में भी सारी बॉडी का ब्लड सप्लाई आता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसी तरह लिवर में भी पोर्टल सर्कुलेशन से भी ब्लड आ रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से भी ब्लड आ रहा है। तो जो मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट्स होती है ऑफ सेकेंडरी मेटास्टेसिस, जहां से सारी बॉडी के ट्यूमर आके दे जस्ट सिट डाउन and causes secondary metastasis. The two common sites are liver and lung. Why these are the two common sites, liver and lung? Because they have a dual blood supply. Okay, so liver is a very common site for secondary metastasis and very common tumors. Like if I ask that which is the most common tumor in female, answer is breast carcinoma. Liver is one of the favorable sites of breast carcinoma. Which is the most common tumor in men? Lung carcinoma. And overall is also lung carcinoma is common. And which is the most common site of metastasis? Again, the answer is liver. So the two common tumors, that is breast and lung, like to metastasize to liver. And the reason being very simple, that it has a dual blood supply, portal circulation and systemic circulation. Again, going back quickly, कि कौन से ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। मेलिग्नेंट फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। ओके, लेट्स मूव ऑन। हिमेंजियोमा, हिमेंजियोमा में याद रखना है, ये बाजुफा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि which is the most common tumor of liver. So everybody will think of adenoma, which is not true. Okay, so most tumor common benign tumor, most commonest benign tumor of the liver is hemangioma. ठीक है, ओमा benign, हेमेंजियो ब्लड वेसल्स का ट्यूमर। याद रखिए कि ब्लड वेसल्स के ट्यूमर, फैट के ट्यूमर, लिम्फेटिक से ट्यूमर बॉडी में सर से पैर तक कहीं पे भी हो सकते हैं, इवन नर्व्स के ट्यूमर्स। ठीक है, फैट के बिनाइन ट्यूमर को कहते हैं लाइपोमा, नर्व के बिनाइन ट्यूमर को कहते हैं न्यूरोमा, न्यूरोफाइब्रोमा। ये बॉडी में जहां से भी नर्व है, जहां पे भी वेसल्स हैं, वहां पे हो सकते हैं। इसीलिए कि लिवर में भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गन ब्लड वेसल के बगैर तो सरवाइव नहीं कर सकता। सो ब्लड, दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर व्हिच इज hemangioma. This is the most common as benign tumor. It usually remain asymptomatic, so that is why it is only picked up on autopsies. Well demarcated capsule होता है, and usually as I said, it usually remain asymptomatic. और जिस जमाने में autopsies बहुत common होती थी, तो ये सिर्फ autopsies पे pick होता था। Usually less than 2 centimeter. ठीक है, liver में 2 centimeter का figure याद रखते हैं। ठीक है, जो hepatocellular carcinomas होते हैं, जो significant tumors होते हैं, they are usually more than 2 centimeter. ये 2 centimeter की tumor किस they are picked up with which modality? It is ultrasound. Okay, so just remember this figure of 2 for the tumors. Okay, 2 for tumor, T for tumor, T for 2 for tumors. ठीक है, 2 का figure significant है, 2 centimeter से जरा बड़े होते हैं, तो फिर जो है they are usually picked up as tumors. ओके, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हेमेंजियोमा की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? इनकी नॉर्मल लोकेशन होती है, दे आर जस्ट बीनीथ द कैप्सूल। तो जब ये बड़े होते हैं तो क्या होता है, कैप्सूल स्ट्रेच होता है, एंड वंस दीस ट्यूमर्स एनलार्ज एंड एज दे आर जस्ट सिटिंग बीनीथ द कैप्सूल may rupture, and once the capsule is ruptured, the blood enters into peritoneum and the patients can present with the peritonitis in an emergency which is a life-threatening condition. I again repeat, most common benign tumor है, blood vessel का origin होता है, benign होता है, usually remain asymptomatic, but sometime when hemorrhage occurs, the tumors increase in size, and as they are sitting just beneath the capsule may rupture and blood can enter into the peritoneal cavity and can cause peritonitis. So this is the clinical significance of hemangioma. Okay. So this is the figure, what you can see, these pink cells. This is, what is this? This is the HNE of a tumor. If I said, what is this? You can get this picture. Please keep in mind, you can get these pictures in HNE. The most of the pictures which I used to show in my PowerPoint presentation, 99% are from Robbins. And the reason being putting them here is that, these can be asked in OSPs, okay? So what these pink cells are, if I say this is okay, this is an OSPI question. Okay, this is a picture taken from the tumor of liver, which was located just beneath the capsule, measuring 1 centimeter, and now this has been removed in autopsy. So what is this likely to be? अब ये pink cells क्या है? This is an HNE. मैंने बताया HNE पे 2 ही कलर होते हैं, या तो pink होता है या blue होता है।
ठीक है। जिस तरह रेडियोलॉजी में दो ही कलर होते हैं ना, ब्लैक होता है और व्हाइट होता है, वो ब्लैक और व्हाइट में ही देख के बताते हैं कि क्या डायग्नोसिस है। तो हम भी इस पिंक और ब्लू भी सिर्फ देख के बताते हैं कि व्हाट इज द डायग्नोसिस। ओके, सो दिस इज द लिवर, द पॉर्ट विद अबंडेंट यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। और ये क्या चीजें इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। एक तीसरा कलर भी नजर आ रहा है स्लाइड पे, पिंक, ब्लू, और ये कौन सा कलर नजर आ रहा है, रेड। ये कौन सा कलर नजर आ रहा है, रेड। ये कौन सा कलर नजर आ रहा है, रेड। ये कौन सा कलर नजर आ रहा है, रेड। ये कौन सा, दीज आर बेसिकली, ऐसे लग रहा है कि लिवर के अंदर ब्लड की लेक्स बन गई है। ओके, so if I have to describe it, I will describe it that this is the liver parenchyma, and there are big dilated spaces which appears to be filled with predominantly with these RBCs. And if you open up the Robbins and look at the picture, it's more easy to understand. And this light pink color material, ठीक है। तो ये बड़ी, these are the large dilated spaces, और ये diagnosis is hemangioma, ठीक है। अगेन जो बात मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि मॉर्फोलॉजी कभी भी अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे आपसे बगैर सिनेरियो की नहीं पूछी जाएगी। आपको कोई सिनेरियो देंगे कि एक छोटा सा ट्यूमर था, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, उसको कोई सिरोसिस की हिस्ट्री नहीं थी, उसको कोई इन्फेक्शंस की हिस्ट्री नहीं थी, and then this is removed to an autopsy, there must be some link, ठीक है। इससे आइसोलेशन में सिर्फ ये तस्वीर दिखा के आपसे कोई, it's very unlikely that somebody is going to ask the morphology, ठीक है। लेकिन आप इसमें मुझे बहुत क्लियर सी तस्वीरें, अगर मैं जो बाहर मेरे पास बैठा होता है उसको मैं सिखा दूंगी कि देखो ये तीसरा कलर नजर आ रहा है लाल रंग का, तो अब उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक्चुअली लाल रंग क्या है, what is this red color is about, these are actually the dilated blood vessels। Okay, hope this is clear. Coming back to the next group of the benign tumors, which is hepatocellular adenoma. Term itself is self-explanatory. Adenoma. Adenoma means glandular structure, benign tumor of glandular structures, which is pretty common. This can be there in the colon, in stomach, etc. Then hepatocellular. Hepatocellular का क्या मतलब हुआ कि have a association or have a link with hepatocytes. So what the hepatocellular adenomas are? These are the benign neoplasms developing from hepatocytes. Okay. So if I've asked that what are the hepatocellular adenomas, say this is a benign tumor which arises from the hepatocytes. Hepatic adenoma, the benign neoplasm composed of normal hepatocytes, and they except one subtype. Again, I repeat, except one subtype, they usually do not have portal tracts. ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान ही है ना, जो आपके हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, हम देख के कैसे बताएंगे कि हेपेटोमा है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह लग रहा होगा या ये नॉर्मल लिवर है। तो जो हेपेटोमा होता है उसमें यूजुअली देयर आर no portal tracts, ठीक है, except one histological type, except one subtype which is inflammatory. So usually they don't have portal tracts, central veins or bile ducts. More common in women, ठीक है। ये याद रखना है कि hepatic adenomas जो है वो women में common होते हैं। क्यों common होते हैं? There is a reason for it, that they have a very strong association with contraceptive pills, yeah, the hormones which are taken as contraceptive pills, and this association is so strong that it is written in the book that when these pills are not being used, the tumors don't exist. Okay, so common in women, कैसे याद रहेगा? Because they have a very strong association with the contraceptive pills, and as I said, that it is written that they have such a strong association, that in the times that when these hormones were not used, these tumors also didn't exist. So usually, again, they usually remain asymptomatic. ठीक है, छोटे से ट्यूमर होते हैं, वो कोई ब्लड कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते, कोई वेट लॉस नहीं करवा रहे होते, कोई कैंसर नहीं करवा रहे होते. So yeah, they usually remain asymptomatic. Sometimes they present with a right upper quadrant pain. ठीक है, जब ये ट्यूमर्स बड़े होते हैं, क्या करते हैं? जो डीप ऑर्गन्स होते हैं उनमें यूजुअली पेन तो नहीं होता ना, सारा किडनी तबाह हो जाता है, लिवर तबाह हो जाता है, पेन नहीं होता. पेन कब होता है? जब उसका कैप्सूल स्ट्रेच करता है. ठीक है, पेन के रिसेप्टर्स वहां पर है. जब ट्यूमर बड़ा होता है, कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, तो दे हैव पेन and they present with a rupture, hemorrhage or malignant transformation which is very rare. ये सब इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, आपको इस वक्त लग रहा होता है कि मुफ्त में हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि malignant ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा, या कितना चांस है
कि malignant transformation इसमें हो जाएगी. When you are sitting as a patient or one of your close one is sitting as a patient, this is very important कि ये benign tumor है क्या ये malignant में change हो सकता है या नहीं हो सकता. So they can transform into malignant tumors, but very rarely. This is a rare incident. This is a development, this slide, which is in the last 4 to 5 years when I was a student and even I was a postgraduate student. And even then, hepatic adenoma is just hepatic adenoma, a benign tumor arising from the hepatocytes. But now, even in the Robin, it is being incorporated. बहुत डिटेल नहीं कराऊंगी, लेकिन दो तीन चीजें जो है ना, इवन जो की बॉक्स होता है आपका रॉबिन्स के आखिर में दिया होता है ना, की बॉक्स है कौन से की पॉइंट्स है विच यू शुड नो, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो न्यू डेवलपमेंट है प्लीज इसको याद रखिए. समटाइम they just want to, the examiners just want to know that either you have gone to the recent changes or not, so they simply ask कि hepatic adenoma को कैसे classify करते हैं. तो hepatic adenoma now is being classified on the molecular basis and clinical and pathological findings. Okay, so this classification is changed, and this is changed in this recent edition. If you pick up the previous editions, it was not like this. So अब हम किस तरह classify करते हैं hepatic adenomas को? The hepatic adenomas are classified on the molecular basis, ठीक है, and on the clinical and pathological findings. But this classification is largely on molecular basis. And why we need to divide them on the molecular basis? क्या histopathologists ये चाहते थे कि चीजें और complex हो जाएं ताकि we have our weightage? No, it is not like this. It was done because these tumors, these different molecular subtypes have different risk of malignant transformation. मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद पेशेंट हैं या आपका कोई रिलेटिव पेशेंट है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये मालूम करना कि ये जो भी बीमारी आपको है ये खत्म हो जाएगी या ये इसको मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म हो सकती है या नहीं. तो ये जो तीन हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं, these are divided because they have different risk of malignant transformation. Okay, so the first molecular subtype is HNF1 alpha inactivated hepatocellular adenoma. आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है, ठीक है, लेकिन जो चीज थोड़ी बहुत याद होनी जरूरी है कि आपको इन तीन हिस्टोलॉजिकल सबटाइप्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है. HNF1 alpha inactivated hepatocellular adenoma, 90% have inactivating mutations of HNF alpha, which is somatic, and 10% has germline mutations. Then this type has some risk of development to hepatocellular carcinoma. But when we come back to this subtype, which is beta-catenin activated hepatocellular adenomas, they have this beta-catenin mutation, and these have very high risk for malignant transformation. Okay, इस subtype को खास तौर पे याद रखना है कि beta-catenin activated, we used to learn about this mutation elsewhere in the colon as well. So this beta-catenin activated hepatocellular adenomas have a very high risk for malignant transformation, and it is recommended that these should be resected even when they are asymptomatic. Sorry, asymptomatic is spelling error. Okay, so these beta-catenin activated tumors have a very high risk for malignant transformation, and they should be resected even when asymptomatic. And this inflammatory hepatocellular adenomas, they are usually associated with non-alcoholic fatty liver disease, and they usually have a benign course. This is a subtype which has very rare chance of malignant transformation. I again quickly repeat कि क्या चीज याद रखनी है. Hepatocellular adenoma की 3 subtypes हैं which are based on the molecular analysis and on the clinical and pathological findings. And why there is a need to divide them? Because they have a very different risk of malignant transformation. So first one is HNF1 alpha, which has some risk again, but this beta-catenin activated hepatocellular adenomas have a very high risk for malignant transformation, and they are usually resected even if they remain asymptomatic. ठीक है, वरना अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक लिवर में चीज पड़ी हुई है और किसी को कोई कोमॉर्बिड्स है, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको पड़ा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा निकालने से. Inflammatory hepatocellular adenomas, out of these subtypes, this inflammatory one
is usually developed in non-alcoholic fatty liver disease, and they have a very rare chance of malignant transformation. Okay, so this is a normal light brown liver. ठीक है, liver का color देखा ना कैसे light brown है, और इसमें ट्यूमर कहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसमें ट्यूमर बैठा हुआ है. अगर मुझे इस ट्यूमर को डिस्क्राइब करना हो, जब हम न्यूप्लेजिया में ट्यूमर पढ़ते थे तो हम कहते थे कि ट्यूमर कैसा होता है, वेल डिमार्केटेड होता है. ठीक है, ये कोई अंदर इसकी टंग नॉर्मल लेवल में नहीं जाती है. ठीक है, ये बैठा हुआ है यहाँ पे. इट इज सर्कमस्क्राइब. यू कैन सी that it is not infiltrating, it does not have it has the crab like edges, infiltrating edges into the normal liver. And when you look over here, this is just like normal liver. ठीक है, normal liver कैसा होता है, इसमें abundant eosinophilic, abundant का मतलब होता है बहुत सारा, excessive eosinophilic cytoplasm होता है. ये एक artery है, but what you can see over here, there are no portal tracts. ठीक है, hepatic adenoma में usually there are no portal tracts. Only the inflammatory subtype has some ductular proliferation. Otherwise, they usually don't have portal tracts. अच्छा, इस तस्वीर को देख के घबराई नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी. मैं इसको just the reason of putting this picture over here is कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो molecular subtypes हैं, how do you diagnose them, you can give a simple answer that they are diagnosed on the basis of immunohistochemistry. Okay, there is no need at your level, in my opinion, I may be wrong, but in my opinion, you didn't know, you guys don't need to go this much detail. But if someone asks you, okay, as you said, these are the molecular subtypes, how do we come to know the molecular subtype? You can say that these can be diagnosed on the basis of a histopathology technique which is called immunohistochemical states. Okay, I again repeat, they can be diagnosed on the basis of immunohistochemical states. Again, this figure with this description, all is there in Robbins. If anyone want to go through this, you can go through this, and if you have problem and want to understand, I can explain it to you. But I will explain it in this class. Everybody will not get it, and just it adds to the confusion. Malignant tumors. Okay. अगर कोई भी आपसे पूछता है, अब हम जनरल पैथोलॉजी में आ गए. malignant tumors, they are primary tumors and secondary tumors. Primary tumors क्या होते हैं? The tumors which have origin from the cell of that organ. Secondary tumors क्या होते हैं? The tumors which have developed which at some other site and now have moved or metastasized to liver. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? Secondary tumors. Like example, primary tumor, hepatocellular carcinoma. The malignant epithelial tumor which have origin from the hepatocytes. Secondary tumor की example, breast. The tumor is infiltrating ductal carcinoma of the breast, which has arisen in the breast, and then through the lymphatics it has traveled to liver. Liver में secondary tumors क्यों common होते हैं? Liver में secondary tumors इसलिए common होते हैं कि liver has a dual blood supply. So if I asked you to list the malignant tumors, hepatocellular carcinoma, malignant tumors of hepatocytes, hepatoblastoma. This is whenever there is a term of whenever this term is blastoma is there, it means a tumor which is composed of immature cells. Immature cells किन में होते हैं? Usually बच्चों में. जिन tumors में blastoma आता है वो usually neuroblastoma. Neuroblastoma किस में arise होता है? बच्चों में होता है. क्योंकि it is ending with the term of blastoma. The term blastoma or blastomatus means immature cells. Okay, so the tumors of immature cells usually medicine में कोई भी चीज 100% नहीं होती. Usually develop in children. So hepatoblastoma is the most common malignant tumor of hepatocytes in children. Cholangiocarcinoma is a malignant tumor arising from bile duct. So 3 primary malignant tumors जो याद रखनी है liver के: hepatocellular carcinoma, malignant tumor of arising of malignant epithelial tumor arising from hepatocytes. Hepatoblastoma, malignant tumor of immature hepatocytes, common in children as any other tumor. Then cholangiocarcinoma. The cholangiocarcinoma is a malignant is a type of adenocarcinoma which arises from the bile ducts. ठीक है, liver में किस तरह blood vessels हैं. Blood vessel का हमने benign tumor किया, hemangioma.
इसी तरह वहाँ पे बाइल डक्ट्स भी हैं, बाइल डक्ट से जो ट्यूमर अराइज होता है इसकी यूजुअली ग्लैंडुलर अच्छे वेल फॉर्म्ड एडिनोकार्सिनोमा लाइक फीचर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा. Okay, so as I said, erroneously, the hepatocellular, the other name of hepatocellular carcinoma is hepatoma. Okay, hepatoma is not synonymous with hepatocellular adenoma. Hepatoma is a misnomer for hepatocellular carcinoma. We should usually one should avoid this term, although sometimes it's been written, so you know these misnomers. 85% of the cases of hepatocellular carcinoma occurs in countries with high rate of hepatitis B infection. ठीक है, जब हमने हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन किया था वहां हमने पढ़ा था कि अगर ट्यूमर्स जो है जितने यंग एज में डेवलप हो रहे हैं, यानी जो बच्चों में ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं say after 5 years, 10 years, less than 10 years, unme risk of development of hepatocellular carcinoma is far more common than if the infections are developing or if the infections are developing at a later age. So the risk is far more common than if the infection is developing in the that if the infection is developing in the late age. And in the young age, we have read that infection usually develop through vertical transmission. Vertical transmission क्या होती है? Through the placenta. तो इसीलिए जब infections बच्चों में होते हैं less than 10 years, so the subsequent risk of developing hepatocellular carcinoma and other complication is far more common as compared if the infections are acquired at a later line. इसीलिए जो वर्टिकल ट्रांसमिशन चूंकि कॉमन होती है उन एरियाज में जहाँ हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, जैसे चाइना है, अफ्रीका है, so the risk of hepatocellular carcinoma is very high in these countries and associated with hepatitis B infection. So causes, infectious causes, we know very well chronic infections, the like hepatitis B, hepatitis C. Out of this, hepatitis B is far more risk. The reason I said कि जब vertical transmission होती है तो उनमें और young age पे risk बहुत ज़्यादा. Then metabolic liver diseases. Metabolic liver diseases में hemochromatosis is on the top. Metabolic liver diseases हमने कौन सी पढ़ी थी? Acquired NASH, inherited hemochromatosis, Wilson's alpha-1 antitrypsin deficiency. As all these metabolic disorders can end up in cirrhosis and chronic liver disease, so all of them are all of these patients can develop hepatocellular carcinoma. But out of these, the risk of development of hepatocellular carcinoma is most common with hemochromatosis. एक और चीज याद रखनी है, डाइटरी एफ्लोटॉक्सिन्स. ये एफ्लोटॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? Aflatoxins are the toxins which are produced by the fungi like Aspergillus, and Aspergillus कहाँ grow होते हैं? On the food crops. Just give 2 minutes because this is common in our part, in the part of the world where we live and in the other underdeveloped countries. होता क्या है कि जो ये सारा दिन हम शोर सुनते हैं कि जो crops हमें store करनी होती है, they should be stored at appropriate temperatures. लेकिन होता क्या है कि जैसे हमें अपनी गंदम स्टोर करनी है और हमारे पास अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स, अप्रोप्रिएट स्टोर रूम्स नहीं है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है. जब मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या होता है? वहाँ पे फंगस ग्रो करता है लाइक एस्परजिलस, which has a capability to secrete aflatoxins, and these toxins enter into our body. And how they do enter into the body? फिर हम बड़े मजे से वो गंदम जो कि जिसमें फंगस लग चुका होता है उसको हम फेंकते तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? उसको ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करके बना लेते हैं उसका आटा, and then we make rotis from it. And once you make rotis from it, what is going to happen? We can have aflatoxins, so which are risk factor for hepatocellular carcinoma. Okay, so this problem. This problem is of the underdeveloped countries. Underdeveloped countries में जो food crops होती हैं, they used to remain there. The temperatures are not maintained. Fungi grow over there like Aspergillus. They secrete a toxin which is aflatoxin, and once we have taken those crops, we are prone to develop hepatocellular carcinoma.
सो ये जो रिस्क फैक्टर्स है ना, इसमें रिस्क फैक्टर्स है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब बाहर हेपेटोसेलुलर, बाहर का मतलब है कि इन द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज hepatocellular carcinoma rare associated with the NASH, with the alcoholic liver disease, etc. But we are still juggling with the dietary problems like any other underdeveloped countries and also with infections. ठीक है, हमारे hepatitis भी उतना common of course नहीं है, that is common in China and in countries like Africa. So, but still we have these dietary issues as well. और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 1 मिनट लेके होल्ड करूँगी। ये जो हम छालिया दी जाती है ना इतनी फरावानी से, छालिया के साथ भी यही होता है कि जब ये छालिया बाहर से आती है सो ये बहुत हार्ड होती है। अगर आपके यहाँ जो अगर जिन फैमिलीज में छालिया खाई जाती है, छालिया को तोड़ने के लिए यू नीड अ कटर, लेकिन ये जो हमें शाही सुपारी और तुलसी सुपारी एक्सेट्रा में जो छालिया मिलती है ये सॉफ्ट होती है। तो पता है इसको सॉफ्ट कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक इट सॉफ्ट? ठीक है, आपके घर में आपकी कोई दादी नानी छालिया खाती होंगी तो उसको कटर से तोड़ती होंगी, लेकिन हाउ कम पॉसिबल कि ये जो पैकेटों में छालियां मिल रही है तुलसी शाही सुपारी ये इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? ये इतनी सॉफ्ट इसलिए होती है क्योंकि इसको बकायदा जो छालियां होती है उसको फंगस लगा हुआ होता है, उसको तोड़ना आसान होता है। दिस इज हैंडल्ड वेरी बैडली। इसी तरह ये जो गुटखा किया जाता है इसकी भी, इसको भी बकायदा ये जो छालियां इसके अंदर जो कुछ भी बलगम वलगम डालते हैं दैट इज उसको बकायदा गलाया जाता है। कैसे गलाया जाता है? इन टेम्परेचर्स पे रख दे, हर चीज गल जाएगी। अपने घर की कोई चीज उठा के इतनी गर्मी है बाहर रख दीजिए वो गल जाएगी। तो बेसिकली ये उसमें फंगस ग्रो होता है, फिर उसको आराम से वो पीस लेते हैं और हमें दे देते हैं। So these are basically the whenever the fungi are there, they are going to release these toxins. ठीक है, ये याद रखिए ये इसके causes है और इसमें ये dietary problems and infections are a problem of the underdeveloped countries and metabolic disorders like NASH etc. are the problems of the Western world. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर्स इतनी सारी चीजें हो रही है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर करने का बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन दो चीजें याद रखनी है कि हेपेटोसेलुलर की कार्सिनोमा की डेवलपमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज द एक्टिवेशन ऑफ बीटा कैटेनिन, ठीक है, व्हिच वी डिड व्हेन वी वर डूइंग हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, के इसमें एक पर्टिकुलर एडिनोमा है व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर म्यूटेशंस, ठीक है, और इनएक्टिवेशन ऑफ P63. These are the two most common mutational events. Then interleukin-6 is an inflammatory cytokine which is released and it is also has some association with the development of hepatocellular carcinoma. ठीक है, इसीलिए वो सारे पेशेंट्स जिनको chronic liver disease हुई है they are predisposed to develop hepatocellular carcinoma. जब हमने न्यूक्लेजिया किया था वहां पे जो chronic inflammations होती हैं like chronic gastritis and अभी आपको डॉक्टर साहब ने कराया होगा chronic gastritis in stomach lead to the development of adenocarcinoma of the stomach. इसी तरह जब chronic inflammations liver में हो रही होती है तो they predispose to the development of hepatocellular carcinoma or inflammatory uncontrolled release of inflammatory cytokines like interleukin-6 lead to is one of the etiological factors, one of the events in the development of hepatocellular carcinoma. क्विकली बहुत डिटेल में दिया हुआ है लेकिन इस तरह करने की जरूरत नहीं। प्रिकर्सर लीजन्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की कौन सी हो सकती है? हेपेटोसेलुलर एडिनोमास which we already did, and out of these the beta catenin inactivating one is the most common. Then there are dysplastic nodules. This is something which is discussed in very detail in Robbins, that small nodule होते हैं, large होते हैं, लेकिन बस इतना याद रखें कि dysplastic nodule होते हैं। और डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन वही है जो शुरू से आखिर तक पैथोलॉजी में रहेगी कि जिसमें न्यूक्लियर एटिपिया होता है, प्लेमॉर्फिज्म होता है। So these two are the precursor lesions, and please don't confuse. Cirrhosis is not a pre-malignant lesion. Okay, patients with a chronic liver disease and cirrhosis can develop hepatocellular carcinoma. But if somebody asks you that is cirrhosis a pre-malignant lesion, so no, cirrhosis is not a pre-malignant lesion. So please don't confuse. Morphology कैसी नजर आती है? Morphology can be well differentiated to highly anaplastic. Okay, so better differentiated hepatocellular carcinomas, the cells look that look much like the normal hepatocytes, and grow in the structures called thick trabecular structures, recapitulating liver cell plates, or they are pseudoglandular. Poorly formed भी हो सकते हैं जो ectatic bile canaliculi होते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स की तरह भी लग सकते हैं अगर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। और एक चीज जो जैसे आप लोग पूछते हैं दैन की मॉर्फोलॉजी में थिक ट्रेबिकुलर स्ट्रक्चर्स की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर पुअरली फॉर्म्ड होंगे तो दे कैन लुक लाइक बाइल डक्ट्स।
There is a distinctive variant of hepatocellular carcinoma which is called fibrolamellar carcinoma, which usually develop in non-cirrhotic livers and have a good prognosis. इसके सिर्फ इसलिए share कर रही हूँ क्योंकि ये pictures में Robin में इसमें ये tumor है, and you can see the tongues going into the normal tissue. If you compare it, although I am now short of time, so I cannot compare it. But again, अगर एडिनोमा से compare करें तो इस केस में कोई circumscription नहीं है. And even you can see over here कि these are the malignant cords and they are going inside the surrounding fibrous tissue. Sometimes the changes are masked. The clinical symptoms of hepatocellular carcinoma are masked by underlying cirrhosis of chronic hepatitis. अफ्रीका वगैरह में एफ्लोटॉक्सिन का एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ इसका रिस्क ज्यादा है. Most valuable for the detection of the small tumors, as I said, up to 2 centimeter imaging studies like ultrasound, CT, and MRI. With the vascular and contrast studies. Treatment क्या होता है? Small tumors, again up to 2 centimeter or 2 to 3 centimeter, they are surgically ablated through embolization or with microwave radiation or freezing and have good outcomes. ठीक है, इसलिए screening बहुत important है. Hepatitis B के patients हैं, उनकी screening हो, small tumors can be picked, removed, and they have good outcomes. But once the tumor are of large size, then they, for the local control, radiofrequency ablation was done and chemoembolization is performed. Hepatocellular carcinoma की clinical features होते हैं weight loss like any other malignancy, may be asymptomatic, worsening of the pre-existing liver disease and acute liver failure. Signs of cirrhosis होंगे, hard and large right upper quadrant mass होगा और liver भी मिल सकती है. Hepatocellular carcinoma, the favorable sites where hepatocellular carcinomas like to metastasize are rest of the liver through portal veins, lymph nodes, lung, bone and brain. ये वो sites हैं जहाँ पे hepatocellular carcinoma metastasizes itself. Labs में, in the labs, the most important are the alpha fetoprotein. ठीक है, alpha fetoprotein is a serum marker which is, if it has high serum values, it means the patient has hepatocellular carcinoma, elevated in 70% of the patients. So even in 30% may remain normal. Diagnosis कैसे होता है? Clinical presentation पे alpha fetoprotein पे, ultrasound पे, triphasic CT, MRI, and finally biopsy, which is the gold standard. Again, what you can see here is hepatocellular carcinoma. This is the tumor. You can see the tongues going in. If you compare it with adenoma, adenoma was well circumscribed, but here you can see these white areas going into the normal liver that has infiltrative borders. And then this is the photomicrograph. You can see जो हम कह रहे थे ना thick trabeculae, वो thick trabeculae ये पूरी जो thick लगता है कि plates thick हो गई हैं, but they resemble very much to the normal hepatocytes. Prognostic factors में जो tumor का size बड़ा है, difficult to treat. Extrahepatic spread, difficult to treat. Underlying liver disease, the patient usually don't have good outcomes. Performance status, overall performance status is important. Hepatoblastoma, as I said, blastoma means immature cells. This is the most common malignant tumor in children. It is associated with syndromes like Beckman syndrome, like FAP, and etc. And this is a photomicrograph, immature cells. ठीक है, इनको as liver cell identify करना मुश्किल है. It is important कि ये अगर आपको morphology नहीं भी आती तो it's okay, but at least you should do the morphology of hepatocellular carcinoma. Okay, so these slides are default. Cholangiocarcinoma. Cholangiocarcinoma के लिए इतना याद रखिए. Cholangiocarcinoma is a malignant epithelial tumor of bile ducts. Okay. This is the liver. ठीक है, liver का कैसा कलर होता है? लाइट ब्राउन कलर होता है. इसमें ट्यूमर कहाँ पे? ये वाला ट्यूमर. And you can see that its borders are merging with the borders of liver. ठीक है, ये infiltrative borders होते हैं, इसीलिए these borders actually merge with the surrounding liver. Okay, and what you can see here, the glandular structures. मैंने कहा था adenocarcinoma होता है, इसमें बकायदा glandular structures बन रहे होते हैं. What you can see, these new ones, glandular structures of cholangiocarcinoma. Secondary liver metastasis. Liver is the most common site of blood-borne metastasis. Common primaries are colon, breast, lung, stomach, pancreas, and melanoma. Polystatic picture होती है, biopsy FNA पे diagnose हो जाता है. ठीक है, common sites as I told,
Okay, tumors which are very common like colon, breast, who's like to metastasize to liver. In some cases, अगर single nodules है metastatic nodules है तो can be resected. लेकिन metastasis आपने याद रखनी probably this is the last slide. Okay, now we are done with the presentation.